रणजीत जी दुगड़ बैठे हैं, जो कुछ प्रश्न कुछ थे ना, कोई प्रश्न और प्रश्न, यदि सबके काम के हों तो मैं सबके बीच ही उत्तर देने का प्रयास करूं। तो आपके प्रश्न आप पूछ लो, मैं उस उत्तर इस मानवता के महासूर्य आचार्य श्री महासमंत जी को हम सबका नमन। गुरुदेव, लगभग 35 बरस से ध्यान की साधना कर रहा हूं। गुरुदेव से मैंने एक जिज्ञासा रखी कि गुरुदेव, ध्यान की अंतिम परिणति क्या हो। गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया कि निरंतर प्रयास करो, मस्तिष्क खाली रहे, न कोई चिंतन हो, न कोई कल्पना हो, न कोई विचार हो। हमको मन के परे जाना है, हमको मस्तिष्क को खाली करना है। उसमें सारी बातें समा जाती है। जब मस्तिष्क खाली होगा तो हम राग और द्वेष से अपने आप दूर चले जाएंगे, हम मोह से दूर चले जाएंगे। हम सारे संबंधों को, जैसा गुरुदेव ने फरमाया, सारे संबंध अनित्य है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग निश्चित है। तो गुरुदेव, ये निर्विकल्प की स्थिति, ये शून्य की स्थिति, ये निर्विचार की अवस्था, ये कैसे प्राप्त हो, इसके लिए क्या साधना करें। दूसरा प्रश्न था गुरुदेव, he is asking to His Holiness how to stay thoughtless in life. 根性においてどのように悲しみを克服するかということについてお話しされました。For meditation of thoughtlessness, there may be taken any support like perception of breathing, perception of body, or any mantra as arham, etc. So this is a way of getting some thoughtless or concentration of mind on the base of support, breathing, body, and any arham, etc. mantra. Second way is without support, no support, neither perception of breathing, nor any mantra, nor sensations of body. Only we sit and body should be motionless. As much as possible, body should be motionless and the body should be relaxed. Understand? Understand? Body should be relaxed. And then our lips should be touched one another. Lips. Second thing. First thing is motionlessness of body and relaxation of body. Second thing is lips should be touched one another. Third thing is then we try to be thoughtless, but sometimes thoughts arise, thoughts come, then no tension, thoughts came, no tension, but perceive the thoughts and again try to become thoughtless. So if thoughts come, then there should not be tension. Oh, thoughts came, oh, thoughts came. Let them come, let them come. They come and perceive the thoughts and try to become thoughtless. This is a process of being thoughtless, maybe. बड़ी कृपा गुरुदेव ने सीधा First Japanese, Russian, then Vietnamese. Yeah. Translate the answer. どのようにマインドを空にしなくては瞑想に入れません。瞑想中に何か妄想が起きたときにはどうしたらいいのでしょうか。妄想に引きずられないことです。妄想が起きても、ただ妄想だ、ただ考えが起きた、それだけでそこをスルーしていきます。そしてまた何も考えない瞑想の状態に戻っていきます。
И он отвечает на вопрос, как оставаться в состоянии безмыслия в повседневной жизни. Первое – это медитировать на любой объект постоянно, будь это тело, будь это мысли или любой другой объект. Каждый момент должен быть моментом медитации. Второе – это положение тела. Фиксируйте неподвижность и стабильность своего тела, а также расслабленность ваших губ. И третье – больше фиксируйтесь на наблюдении за процессом дыхания. Để có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống thì thầy có đưa ra hai điều. Điều thứ nhất đó là mình phải ý thức được hơi thở. Khi mình ý thức được hơi thở thì mình sẽ tập trung, và sự tập trung đó sẽ dẫn cho mình đi đến vượt qua mọi khó khăn. Điểm thứ hai đó là phải giữ cho cơ thể ổn định, bất định. Ở đây thì thầy nhấn mạnh 3 điểm. Điểm thứ nhất đó là phải ngồi trong tư thế thoải mái, thư giãn và bất định. Cái thứ hai nữa đó là mình phải luôn luôn thư giãn, và cuối cùng đó là giữ cho miệng của mình không có nhấp nháy. एक जिज्ञासा और गुरुदेव से हम प्रवचन में ये निर्देश पाते हैं कि जैसा लक्ष्य होता है उसके अनुरूप जीवन का निर्माण होता है। लक्ष्य ऊंचा हो, अगर पूर्णता का लक्ष्य है तो हम पूर्णता प्राप्त करेंगे, अपूर्णता का लक्ष्य है तो अपूर्ण ही रह जाएंगे। हमको भक्त से भगवान बनना है, हमको सिद्धत्व को प्राप्त करना है। गुरुदेव इसका निर्देश देते हैं कि सिद्धत्व की आकांक्षा रखो, सिद्धत्व को जीवन में प्राप्त करना है। इसके लिए साधना इस अनुरूप बने, लक्ष्य इस अनुरूप बने। गुरुदेव कई बार आप निर्देश देते हैं कि दर्शन केंद्र पर उगते हुए सूर्य के रंग के साथ ओम सिद्धा का जाप करो। इससे गुरुदेव दर्शन केंद्र और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो 9 हार्मोन्स को नियंत्रित करती है वो सारे संतुलित हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, कभी कभी अतीन्द्रिय की अवस्था भी हो जाती है। गुरुदेव इस साधना को और आगे सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए सिद्धा मंत्र का गुरुदेव निर्देश देते हैं। इसको हमारे अवचेतन मन तक, हमारे तेजस शरीर तक, हमारे प्राणमय शरीर तक, हमारे अंतस तक कैसे ले जाएं कि हमारे आचरण में वो अभिव्यक्त होने लगे। So he is asking the question that Acharya Sri always guide to keep the goal on the higher side. Our goal is to become the Siddha, liberation of the soul. For that, Acharya Sri also guide to meditate on Darshan Kendra, Namo Siddhanam. So he asks, guide us how we can practice this more and how can we achieve the liberation and we can achieve our goal. アチャリアはいつもゴール、高いところにゴールをお持ちになります。そしてその瞑想で先ほど通訳飛ばしてしまったのですが、瞑想のためには体をリラックスさせておかなければいけません。そして呼吸に意識を持っていきます。そして私たちは高いところにゴールを持たなければいけません。私たちのゴールは何でしょうか。私たちのゴールはサルベーション、悟りです。そこの悟りに向かって私たちは進んでいきます。В традиции Прекши есть медитация на психические центры. И когда мы концентрируем внимание на Даршан-кендре, точки между бровей, то мы погружаемся в более высокие состояния. И глобально через концентрацию на наших высших центрах мы можем обрести состояние просветления. И вопрос в том, как быстрее к этому состоянию прийти, через что можно углубить практику для достижения просветления. Trong quá trình thực hành thiền thì Ngài Acha luôn hướng dẫn học trò của mình là thiền tập trung vào trung tâm trực giác thì để có thể thoát khỏi mọi khổ đau và có thể là được tự do. Thì câu hỏi ở đây là nhờ Ngài hướng dẫn cách tập thiền tập trung vào trung tâm của trực giác để có thể sớm thoát khỏi. Goal should be high, but if that goal is able to be achieved, that type high should be goal. That goal which I cannot achieve, what meaning of making that goal? So goal should be
high, but only that goal should be decided which may be achievable by us. Goal is high, then some small goals also may be decided. Suppose from Surat, our monks have to go to Rajasthan, Ladnu. Then they have decided that we have to go to Ladnu. But first we should go to Bav, then we should go to any areas of Marwad, then we have go to Ladnu. So first main goal is Ladnu. But small goal, first we have to go Ahmedabad, then Bav. First goal, the small goal Ahmedabad, then small goal Bav, then Marwad, then Ladnu. So main goal should be high, then small goals also may be decided. Second thing is how we can achieve the goal. So our determination should be firm. In Kayot Sarg, we should instruct ourselves, that is my goal, that is my goal. I have to make effort to achieve that goal. We have only effort. Sometimes we make effort, but goal may not be achieved. Our duty is to make effort. That effort should be made. If we have made effort, even then, if we have not achieved the goal, again try. So we should make effort again and again. One student is doing CA, not clear, again try. Sometimes you can achieve, you may pass CA in CA exam. In this way, in Kayot Sarg, we should instruct ourselves, I have to make effort to achieve my goal. In morning, when we get up, then or before going to bed, we should repeat our goal. I have to try to go. In this way, we can make some success in that. देव का जो इंगित है उसको जो मैंने समझा, 4 शब्दों में कहूं तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो, लक्ष्य के लिए जो मार्ग है वो स्पष्ट हो और उसके लिए अपने आप को न्यौछावर करें। गुरुदेव की कृपा, आज मार्गदर्शन मिला, ये 2 सूत्र जीवन के लिए पर्याप्त हैं। जय गुरुदेव।